So yesterday we have discussed about this your diatomic linear chain of diatomic molecules, okay, or atoms, okay. So based on that topic, one question came in exam, net June. Yes, someone mic is on. So June 2013. So we know the dispersion relation for diatomic chain, linear chain is given by K or beta, okay. So they have given constant by K, okay, spring constant by K, we have mentioned by beta. So 1 upon M2, 1 plus minus under root 1 minus 4 M1 M2 M1 plus M2 का square sin square QA by 2, okay. So they are representing wave vector by Q here, okay. So we have used beta spring, instead of K we use here beta spring constant, and we use K for wave vector, okay. They are using Q. So what they're asking what is the velocity of sound, okay. If this is the dispersion, what is the velocity of sound, okay. So we know, sir, velocity of sound in this particular crystal they are asking. they are given one dispersion relation for diatomic linear chain, okay. Now they are asking what is the velocity of sound, okay. So if they are asking velocity of sound, obvious we have to take which branch, acoustic or optical? Acoustic, okay. That means you have to take W minus branch, okay. W minus branch, and that is also in long wavelength region where K is 0, because in K is long wavelength region only your omega K relations are linear, okay. So when you have omega K relation linear, then only your phase velocity or your group velocity will be equal to phase velocity, and that will be equal to your velocity of sound. So okay, so you have to use one thing, that if K tends to 0, okay, that is long wavelength region, okay, then you have to take your sine QA by 2 is approximately equal to QA by 2, okay, and you have to take acoustic branch. So you write acoustic branch W minus, okay, W minus K 1 upon M1 plus 1 upon M2, okay. So minus you have to take minus, this will be 1 minus 4 M1 upon M2 M1 plus M2 ka square, okay, and here it will be Q square A square by 2. Now this is the under root, okay. So by 4, no? So by 4, no? Oh, by 4, okay, by 4, okay. So 4 cancel, okay, and you can solve this by binomial, okay. You know, if 1 minus x, so if x is less than 1, okay, so you can write as a 1 minus x by 2. So if you solve this one, you'll get K 1 upon M1 plus 1 upon M2 1 minus x by 2, okay. So x is M1 M2 by 2 or M1 plus M2 ka square Q square A square by 2, okay. And if you solve further, okay, this will give you sir, by 2 आएगा क्या? by 2 आएगा. अच्छा, okay. x by 2 है ना? Okay. Yes, sir. So this will be K M1 M2 M1 plus M2, okay, and this will 1 cancel हो जाएगा, ये positive हो जाएगा, M1 M2 M1 First term M1 plus M2 आएगी upon M1 M2 आएगी. correct M1 plus M2
m1 to m2. Thank you. So this will be m1 m2 square q square a square by 2. Okay. So इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा. Okay, ये m1 m2 इससे कैंसिल हो जाएगा. Okay, so we will left with omega. This is square. Okay, this is square. Omega minus square. We have, what is the value? K a square. Okay, k a square q square. K q square a square by 2 m1 plus m2. और कुछ छूटा है क्या? ओके, सो इसको मिटा रहा हूं मैं. नाउ आई वांट ओमेगा माइनस. ओके, दिस विल बी k upon 2 m1 plus m2 under root. Okay, a square. Okay, and that will be q. Now if I want group velocity or sound velocity, okay, so bs, because the now you can see the omega versus relations are linear, so you can always write sound velocity is equal to group velocity d omega dq. Okay, so this will give you k a square 2 m1 plus m2. Okay, so I think this is the given option B. This is your correct answer. एंड सर सर हम लोग कोई ऑप्टिकल ब्रांच में किस चीज की स्पीड मिलती है? Optical branch simply is a higher frequency branch. Okay, Yes, sir. ऑप्टिकल ब्रांच सिंपली हायर फ्रीक्वेंसी ब्रांच है जो अकॉस्टिक से थोड़ी ज्यादा होती है, जो जाती है अप टू नियर आईआर तक जाती है. ओके, अगर आपका क्रिस्टल जो है सोडियम क्लोराइड है, ओके, तो ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो लाइट से एक्साइट की जा सकती है. ओके, Yes, और sir. वो फिर वो जाए पर वो होगी मैकेनिकल वेव ही, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी. जी सर. ओके, सो दिस वाज so similarly. सर हाँ, सर एक छोटा सा चीज समझने आया. हाँ. सर फॉर लॉन्ग वेवलेंथ k0 हो रहा है, तो साइन थीटा थीटा इसका क्या मतलब सा- ये कैसे? अगर 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 साइन थीटा ओके, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल, so you can always write sin theta equal to theta ना. Yes sir, but how it is related to तो साइन long यहाँ पे wavelength? साइन के साइन क्या था? साइन के स्क्वायर बाय K2. के था ना, क्या था? साइन के था ना, क्या था? Yes sir, k/2 तो था. ये तो के स्मॉल है, तो ये एंगल छोटा नहीं हो गया? Okay, और okay, ए तो ऑलरेडी छोटा होता ही है. ए कितना होता yes है? sir, yes sir. ये तो लैटिस कांस्टेंट है, तो ये तो वैसे ही Angstrom स्मॉल है. order का. ओके, Yes, sir. so we can always write this. Okay, sin theta equal to theta in the case of this form. So now one more question. Okay, so say we have now diatomic crystal. Okay, पर अब की बार हम क्या ले रहे हैं कि मास सेम है, हमारे पास एक चेन है, वी हैव अ चेन ऑफ diatomic molecule. Okay, and this chain, the masses of the atoms are same, but the spring constant varies. Now एक का spring constant C1 है, that means spring constant alternatively vary कर रहा है, C1 C2 C1 C2 C1 C2. Okay, for example, now we have say a chain. Okay, अब molecule का mass same है, पर मैं इसको A और B से लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, mass same है. Okay, so say this is A. Okay, say this is B. So this is A again. This is B. Okay, so this is A, so this will be B. Okay, say this is again A, and this is again B. Okay, so now say, let us say this is my UN. Okay, UN means iska jo displacement hai, that is UN. Okay, now I'm representing the amplitude of B by VN. Okay, so this is UN, say this is VN. You can do whatever we had done last time also,
but we can also do this way. Okay, we can separately represent the displacement of the atom A and B. So I'm writing this is UN, Vn. Okay, so similarly this will be what? This will be UN plus 1. Okay, and this will be what? This will be your Vn plus 1. So this is Vn, so this will be what? Vn minus 1. This will be your UN minus 1, and so on. And the lattice constant is A. Okay, so lattice constant is A. Matlab this is this total distance. Okay, is this is from here to here. This is A by 2. Okay, this distance is A, like we have done yesterday. Okay, and one more thing. So this is A by 2. So just 1 minute. So this A is what? This A is your this lattice constant C1. Okay, so this is C2, C1. Okay, this is C2. Okay, and this is again C1. So this time you can take lattice constant as A. Okay, so बोलिए. A से A का डिस्टेंस टोटल A होगा ना? क्या बोल रहे हो? A से A, yes, पूरा लेना पड़ेगा. Okay. Okay, so now पिछले बार हमने ये जो कांस्टेंट था वो सेम लिया था ना, बेटा ही लिया था, तो अब तो अभी थोड़ा सा डिफरेंस है ना. अभी बोल रहा है कि सबका मास m है, हमारे पास एटम है, सबका मास m है, पर अब की क्या है, जो कांस्टेंट C1 C2 डिफरेंट है. सो कांस्टेंट C1 C2 डिफरेंट होने से उसका इफेक्ट वही आएगा जो डिफरेंट मास का आता है. ओके, तो अभी लैटिस कांस्टेंट का पता ना, मतलब कहाँ से कहाँ लिया है. अभी जो लैटिस कांस्टेंट जो बताया था ना, डिस्टेंस कैसे लिया वो ये A/2 है. ओके, ये भी A/2 है. ओके, टोटल क्या हो जाएगा? A नहीं हो जाएगा टोटल. ओके, क्योंकि एक लैटिस, मतलब अभी इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा हूँ, ये समझ लो कि एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे 2 एटम पड़े हुए हैं. मोटिव होता है. ओके, लैटिस पॉइंट पे जो एटम रखते हैं उसको बोलते हैं बेसिस. तो ये ऐसे पास में ऐसे रखे हुए हैं 2 एटम. ओके, सो हियर फॉर सिंपलिसिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस वे. ओके, सो नाउ आई हैव टू अप्लाई कैलकुलेट फोर्स फॉर दिस UN. ओके, सो फोर्स ऑन UN क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन UN, सो दैट विल बी व्हाट? मास इज m d2 UN अपॉन dt स्क्वायर. ओके, क्या आएगा बताइए? मास क्या आएगा? ओके, 1 मिनट. दिस Vn, इसको C2 कर दो थोड़ा, वरना पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा. इसको C1. Sir, ये C1 C2 you are just taking consecutive or is there any sequence? नहीं, अल्टरनेट ले रहा हूँ. ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है, पर फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ UN Vn लिया है, तुम आपको इसको U2n ले सकते हो, U2n प्लस में रखते हो, U2n माइनस 1 ले सकते हो. जैसे हमने लास्ट टाइम किया वैसे भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फोर्स इक्वेशन फॉर A? C2 C2 minus UN. Okay, Vn minus UN UN. Okay, plus C1 UN minus Vn minus 1. Vn minus 1 minus UN. Okay. Yes. Okay. Similarly, if I want to write the equation is for UN. Okay. If equation for Vn, that will be m d2 Vn upon dt square. Okay. Now इस पे फोर्स निकालना है, तो पहले की जैसे ऐसे करेंगे. ये C1, ओके, UN प्लस 1 ये वाला माइनस Vn. ओके, प्लस ये वाला बॉन्ड है तो C2. ओके, UN माइनस Vn. ओके, करेक्ट है. now you can apply traveling wave like solutions. Okay, so traveling like solutions, say let us this time I am writing, okay, UN iota KNA, okay, माइनस ओमेगा टी. इस इक्वेशन के लिए मैं ये लगा रहा हूँ सॉल्यूशन. ओके, एंड आई एम अप्लाइंग Vn बी आयोटा के, दोनों में सेम लगा रहा हूँ. KNA खाली एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, माइनस ओमेगा टी. ओके, सो पुट दिस वैल्यूज हियर सॉल्यूशन एंड से क्या डिस्पर्शन रिलेशन आ रहा है. कल हमने जब डिराइव किया था ना, तब हमने यही फैक्टर
ई रेस टू आई ओमेगा टी माइनस के का फैक्टर ऐसा लिया था, और कैसे लिया? आज मतलब यू टू एन इज इक्वल टू ए भी इक्वेशन होती है के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके। तो अगर आप जो भी चेंज करोगे यहाँ पे एक्स में, वो आपके साइन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी लिखोगे, ओके, वो आपके साइन में इफेक्ट हो जाएगा। a/2 लिखो तो साइन k/2 हो जाएगा, k लिखेगा तो साइन k आ जाएगा। तो मैं अभी ये ट्रेवलिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ इस फ्रीक्वेंसी पे। तो ये इस सॉल्यूशन के लिए क्या रिलेशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी पे आपको निकालना है, ठीक है सर? लेकिन के का टर्म हमेशा पहला आएगा ना, उसके बाद टाइम का टर्म आएगा ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो भी इक्वेशन क्या होती है, आयोटा के एस माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहती है इक्वेशन हमेशा, ओके। आपका जो इक्वेशन होता है वेव का, ओके, वो के एक्स माइनस ओमेगा टी भी होता है, ओके, और ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स भी होता है, ओके। ट्राई करके देख लो सर। हाँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन यू हैव रिटन सर, देन हाउ यू हैव रिटन सर C2 Vn minus Un? इस पे फोर्स निकालना है मुझे, यूएन पे फोर्स निकालना है। यस सर। तो मैं क्या लिखता हूँ हमेशा, ये वाला एक्सटेंशन भी, ये इसको खींच रहा है, ये आगे आ रहा है, एक्सटेंशन कितना होगा वीएन माइनस यूएन, और C2 कर दिया ये फोर्स पे, ठीक है। यस सर। अब इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या लगेगा C1, ये माइनस आना चाहिए, C1 UN माइनस VN माइनस 1, ओके। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, VN माइनस 1 माइनस ले लिया। हाँ, तो इसको प्लस कर दिया, वो बात एक ही है। ओके, मींस पॉइंट ए पे पहले C2 का लिया, फिर C1 का, राइट लेफ्ट। ओके सर। जैसे करते आ रहे हैं हमेशा, 2-3 केस तो कर ही लिया हमने। now put the values, okay, so if you put the values, solution क्या आएंगे, just try the solution, okay। so if I put this one, okay, this will give me what, same m omega square a, okay। now if you apply here, this will be C2, okay, un cancel हो जाएगा, तो vn तो आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, only vn is b, you get b, okay, minus un you'll get a, okay, plus C1 vn minus 1, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, b है तो b तो मिलेगा, b and e पावर माइनस आइटा के, ओके, माइनस un है तो सिर्फ you will get only a. Similarly, if I write here m, okay, m omega square b, if I put these values, okay, this will give you C1, okay, un plus 1, that means a तो आएगा ही, and e plus आइटा के minus vn minus vn means b मैंने u कैंसिल कर दिया, un कैंसिल कर दिया है, ओके, प्लस this is C2, this will give you un means a and vn means b, okay। so if you simplify further, okay, if you simplify, so you will get the, I'm directly writing the equations, you please check it, okay। so I'll get the equation minus C1 plus C2 minus m omega square a, okay, minus C2 plus C1 e power minus iota ka into b equals to 0. Say this is 1, 2, so this is 3, okay. So from here I'm getting this equation, and from here I'm writing equation C2 plus C1 iota ka, okay, minus a plus C1 plus C2 minus m omega square b equals to 0, 4. ये इक्वेशन आ रही है क्या? यस सर। बाकी लोग भी देख लो, एक बार चेक कर लो। So if you are getting this equation, you can solve for relation for omega and k, okay. So you can write C1 plus C2 minus m omega square minus C2
plus C1 e power iota Ka. Okay, then C2 plus C1 e power minus iota Ka, and this one C1 plus C2 minus m omega square. Okay, A B equals to 0. Okay, so if you solve this one, okay, you'll get, solve कर देखो, solve करो क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट 0 करना है ना, डिटरमिनेंट 0 करना है, बीटा क्या है यहाँ पे, डिटरमिनेंट 0 करना है ना। या हाँ करना है, डिटरमिनेंट 0 करना है। ओके, डिटरमिनेंट 0 करना है। इसको मिटा दो ना, इसको तो, यस सर। बाकी लोग इसको मिटा दूं मैं। यस सर। ओके, सो इसको मिटा देंगे। सो डिटरमिनेंट को 0 कर दो, C1 प्लस C2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर minus C2 plus C1 e power iota Ka. Okay, similarly here will come C2 plus C1 e power minus iota Ka and C1 plus C2 minus m omega square. Okay, determinant को 0 कर दो, and if you solve this equation, okay, you'll get C1 plus C2 minus m omega square का whole square, okay, minus, okay, you'll get C2 plus C1 e power iota Ka, okay, into C2 plus C1 e power minus iota Ka is equals to 0. Okay, this will give you what, m square omega 4. Okay, and then you'll get 2m omega square C1 plus C2. Okay, and one more term will come here, C1 plus C2 ka whole square. Similarly, if you solve this one, this will give you C2 square. Okay, and C1 C2 e power minus iota Ka. Okay, similarly, if you multiply this one, this will give you C2 C1 C2 e power iota Ka. Okay, and this will give you, सर बीच में से टर्म प्लस होगा ना, कौन सा वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दिया है वो डिटरमिनेंट का माइनस और उसका खुद का माइनस हाँ ना। हाँ इसका खुद का माइनस है, हाँ खुद का भी माइनस है, ठीक है। क्यों नहीं सर, हमने यहाँ लिखा है वहाँ में C1 प्लस C2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये प्लस आएगा ना, तो माइनस माइनस हाँ। प्लस नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, वो भी माइनस है। ओके ओके, ठीक है। So if you solve this further, okay, this will give you m square omega 4 minus 2m omega square C1 plus C2. okay, so इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा। okay, तो ये यहाँ बच जाएगा 2C1 C2, ये C2 कट जाएगा, C1 इसका कट जाएगा। okay, and okay, so 2C1 C2 minus C1 C2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ इसमें, तो दैट विल बी टू कॉस के है ना, टू कॉस, टू भी बार आ जाएगा तो कॉस के है। ओके, और इसको भी सॉल्व कर दें आगे आगे, दिस विल गिव यू m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस 2C1 C2 1 माइनस कॉस के है। ये आ रहा है क्या? ओके, नाउ yes sir. now you can make quadratic equations. Okay, so omega 4 in it will be 2 omega square by m, so C1 plus C2 omega square plus 2C1 C2 Sir, m और m can okay okay एक बचेगा ना, 1 minus cos k equals to 0. Okay, so now I'm directly writing answer, you check it. Okay, so the omega square, okay, so omega plus minus square, okay, that should come what, minus b by 2a. okay, so 2 cancel हो जाएगा, तो it should come C1 plus C2 upon m. okay, minus plus हो जाएगा, b is minus b by 2a. okay, then plus minus b square minus 4ac by 2a,
तो 2 आएगा, सो 2, ओके, एंड बी स्क्वायर अगेन दिस टर्म, ओके, तो एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एंड 4ac का 4 ही बाहर ले रहा हूं मैं, तो दिस विल कम 2, दिस विल कम m, ओके, c1 प्लस c2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac का 4 तो मैंने बाहर ले लिया, a is 1, c is this one, okay, this is your 2c1 c2, m स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने बाहर, 2c1 c2 1 माइनस cos k, ओके, एंड तो ये 2 तो कैंसिल हो ही गया, so this will come this much, okay, c1 is, now you can solve it further, so this will give you c1 plus c2 by m plus minus 1 by m, okay, so c1 square plus c2 square, okay, c1 square plus c2 square plus 2c1 c2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 minus 1 plus cos k, okay, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, so the final expression will be omega plus minus square c1 plus c2 m plus minus 1 upon m, okay, this will be your c1 square c2 square plus 2 c1 c2 cos k, okay, 2 c1 c2 cos k, and if you want to calculate your omega plus minus, okay, omega plus minus, okay, then you have to put under root on the top of this, okay, this is your dispersion relation for diatomic chain whose spring constant alternatively change but the mass is same. Now the question is asked that what is the value of omega, okay, what is the value of omega plus minus at k is equal to 0 and k is equal to pi by a, you have to calculate, and you are given c1 is equal to c, okay, c1 is equal to c and c2 is equal to 10c, निकालो, सर ये जो डिस्पर्शन रिलेशन में क्या ये क्वेश्चन गिवन था? एक ये क्वेश्चन दे रखा है क्रिटिकल में, अच्छा, ओके ओके ओके, क्रिटिकल में क्वेश्चन दे रखा है कि c1 is c, c2 is t, so कैलकुलेट ओमेगा प्लस माइनस, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? माइनस दोनों के लिए फाइंड आउट करना है सर, k is equal to दोनों के लिए so now you can put omega plus, okay, so omega plus, okay, omega plus k is equal to 0 के लिए, omega plus at k is equal to 0, okay, so omega plus k, और पहले नीचे निकाल लेते हैं, माइनस निकालते हैं, omega minus k is equal to 0, माइनस के लिए 0 आ रहा है सर, माइनस के लिए 0 आ रहा है, यहाँ पे k 0 रखेंगे तो c1 plus c2 1 c1 plus c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अच्छा c1 plus c2 तो माइनस के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके करेक्ट, प्लस के लिए 2 times c1 plus c2 by m, हाँ, एंड ओमेगा प्लस, अच्छा ओमेगा माइनस निकालो k इक्वल टू पाई बाई ए पे, 0 आएगा, अच्छा पाई बाई ए पे कितना आएगा, तो c1 minus c2 होगा, ये आना चाहिए 2c m अपॉन 2c बाई m, यस सर 2c by m आ रहा है, ओके, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, ओके, तो c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 m कॉमन लोगे, सो ये हो गया c 2c बाई m, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आ रहा है, ठीक है, एंड ओमेगा प्लस 20c by m कितना 20c बाई m के 22c बाई 22 हाँ, अच्छा 22 यस सर यस ओके, और ओमेगा प्लस एट के पाई बाई ये आएगा 20c बाई m, सर ये 20c by m आएगा ना सर, हाँ, हाँ, ओमेगा माइनस, हाँ, पाई बाई पे आएगा 20 बाई cm
और उस पर आएगा 20 C/m, 20 आएगा, 22 आएगा ना, इसमें एक पे 22 आएगा, एक पे 20 आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सर ओमेगा माइनस एट पाई बाय ओमेगा क्या है? माइनस पे पाई बाई ए पे -20 C/m आएगा सर। माइनस पे कैसे आएगा? माइनस पे 2 C/m आएगा। 2 C/m आएगा। या माइनस पे माइनस लगाओ ना इधर। अरे माइनस तो छोटा ही होगा ना प्लस से हम्म, ऑलवेज। हम्म। हो जाएगा ना क्वेश्चन ये? यस सर। बाकी लोग Yes, कर sir. रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं क्या सर अभी? तो C1 माइनस होगा तो सर C1 तो कैंसिल हो जा रहा है ना, 2 C2/m आ जा रहा है, C2 10C है। कौन सा वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो? यस ओमेगा माइनस एट k इक्वल्स टू पाई बाई ए। अभी चेक करो कितना आ रहा है ये ओमेगा माइनस। ओके, ओमेगा माइनस मतलब प्लस आएगा, ओमेगा माइनस यहाँ प्लस आएगा ना। ओमेगा माइनस में क्या होता है? सॉरी, देखो ओमेगा माइनस है मतलब नीचे नीचे वाली ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। Yes, sir. ठीक है, 11 माइनस 9। यस ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11/m। हाँ, और यहाँ पे C1 माइनस C2 क्या आएगा? 9/m। ओके, तो दूसरी बार नहीं आएगा, Okay, sir. या ऐड हो जाएगा, या C1 माइनस C2 m आएगा। ओके, ये तो C1 माइनस C2 बन जाएगा ना, ये माइनस रखते ही, कॉस के माइनस में के पाई बाई रखते ही। ओके, Sir, he is saying C1 minus C2 is minus 9. That's all, हम्म, I guess. But there you have to take the mod. I think. सर माइनस वाले में 2C1 बनेगा ना, 2C2 तो C2 टू C/m। यस, माइनस वाले में करूँ क्या मैं? क्या आ रहा है? आ रहा है नहीं आएगा सर, उधर शायद मॉड लेना है ना। C1 मॉड minus मॉड क्यों लेना? अभी मॉड क्यों लेना? अभी इसको माइनस करोगे तो ये भी, इसको अगर माइनस में लिखोगे तो ये हो जाएगा, माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर होगा। बाहर निकलेगा C1 माइनस C2 m हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? C1 प्लस C2/m। प्लस C2/m है, तो ये कहता है 11/9 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2C/m तो आएगा। C2 प्लस C2 होगा 2 ना, C2/m होगा ना ये सर। 11C/m आ गया, ये 9C/m आ गया अंडर रूट के अंदर। इसीलिए कह रहा हूँ सर, उधर मॉड लेना है। ओके, सो नाउ बट सर डायरेक्ट कैंसिल करके किया जा रहा है तो 20C भाई आ रहा है सर। डायरेक्ट कैसे करोगे? अरे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, वो तुम्हारा फिर तो स्क्वायर रूट जब ले रहे हो तो तुम C2 minus C1 का स्क्वायर भी ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। वहां पे सब यहाँ हर पर यहाँ पर मॉड C1 लेना। यहाँ पर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या, अच्छा प्लस माइनस तुम बोल रहे हो ऐसे, इसका प्लस माइनस आएगा, इसका प्लस माइनस आएगा, ऐसा बोल रहे हो? ये अच्छा, सर उधर ऑलवेज मॉड लेना होगा। हाँ हाँ ठीक है। ओके, सो हो जाएगा कल ना कैलकुलेशन। ठीक है, अब आंसर में ऐसे दे रखा है तो उसको प्लस मान के कर रहे हैं हम लोग। सो नाउ ओके, सो दिस वाज योर diatomic chain. Okay, now let us see again this lattice vibration in 1D. Okay, so we have seen lattice vibration in 1D. Okay, so what we have found in 1D, okay, so in 1D we have found that our omega by k relations, okay, they have only one branch, they have only one branch. Okay, and that branch is called longitudinal. Okay, so in 1D, okay, there's a 1D lattice, so there's 1D lattice and degree of freedom is only 1. Okay, so when there's a 1D lattice and you have monatomic crystal, that is the degree of freedom is 1. Okay, then your atom has no choice, they'll move only in one direction. Okay, this direction. Okay, so you will get Can it be opposite to this direction? yes motion होगा तो ऐसे होगा ना, vibration होगा तो। okay, so you will get what? longitudinal, and because this is the acoustic wave, so I will represent by A. Okay, so you'll get only one branch, that will be called your longitudinal acoustic, okay, LA branch. You'll get only one branch. Okay, similarly क्यों नहीं हो गया?
क्या हाई चीज? फ्रीक्वेंसी की वजह से ऑप्टिकल ब्रांच नहीं होगी क्या इसके लिए? नहीं, सिर्फ acoustic? हमने जब फर्स्ट केस निकाला था उसमें वन ब्रांचेज आया था हमारा हाँ, मोनोलिथिक में. ओके, वन Yes, वन. yes. ओके, एंड बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दिस इज अ 1D crystal, so degree of freedom also one only. Okay, now similarly when we see same case diatomic crystal, okay, we are going to generalize. Okay, so we have a diatomic crystal, okay, where we have two type of atoms. We have two atoms. Okay, so here our P is 1. P is what? P is number of atom. P is what? Number of atom per कहाँ पे? Lattice point. Okay, number of atom at lattice point. Okay, lattice point. और इसको ऐसे बोल देते हैं number of atom in primitive unit cell. Okay, primitive unit cell, not conventional unit cell, primitive unit cell. Okay, so here it was 1 and degree of freedom also 1. Okay, so we get only one branch. Okay, similarly if we now have a diatomic, okay, in 1D we have a 1D, okay, and we have diatomic, that means P is equal to 2. Okay, and this is again the degree of freedom is 1. Okay, so we got how much? We got two branches. Okay, one is acoustic, okay, so this was your LA, longitudinal acoustic, and it was what? Optical. Okay, LO. Okay, LO means what? Longitudinal acoustic. Longitudinal acoustic. Okay, so this was Low. what? Hello. Okay, so now this was for what? For 1D crystal when degree of freedom is 1. Now in general क्या होता है? In general, okay, I am writing general expression. Okay, so in general, if you have a longitudinal optic होना चाहिए ना? optic branch. Okay, optic branch. Okay, so now in general क्या होता है? If you have a p atoms, okay, you have a p atom per unit cell and you have a f degree of freedom, then in general you will have a pf dispersion curve. Okay, pf dispersion curve or you will have a pf branches. Okay, pf branches. Okay, for example, इसको मिटा दूं क्या? Yes sir. So if you have a pf, p is number of atom per unit cell and degree of freedom is f. Okay, pf, then you'll have a pf dispersion curve. Okay, so out of pf, okay, f will be your what? F will be your this acoustic. Okay, this will be acoustic branches. F will be your acoustic branches. Okay, and then pf minus f remaining will be your optical branches. Okay, now for example, if I have a 3D case, if I have a degree of freedom 3D, okay, so then if it is a degree of freedom is 3 and p is a number of atom, so then I will have a total 3p dispersion curve. Okay, if I assume if f is 3, I'm taking 3D crystal, 3D, then the degree of freedom is 3, so I will have 3p dispersion curve. Okay, so out of this 3p dispersion curve, okay, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना तो आपका acoustic branch होगा. 3 will be acoustic branch. Okay, and remaining 3p minus 3, that will be your optical branch. Okay, for example, if I take p equal to 2 or p equal to 1, अगर मैं p equal to 1 ले लूं, if p equals to 1, okay, and f equal to 1, तब क्या होता है? If p equal to बस केवल acoustic branch रह जाती है. तो खाली p equal to 1 f equal to 1, तो हमारे पास खाली acoustic branch मिलती है हमको. 1 ये pf 1 हो जाएगा dispersion curve, then we get only acoustic branch, that is longitudinal acoustic branch. Okay, now if p equal to 1 f equal to 3, तब क्या हो जाएगा? 3 acoustic branch.
zero the caustic branch and zero optical branch. Okay, so that means in monoatomic crystal, okay, when there is a p equal to 1, p equal to 1 के लिए आपको हमेशा ऑप्टिकल ब्रांच नहीं मिलेगी. क्लियर? सो दैट मीन्स इफ यू हैव p equal to 1 and f equal to 3, तो इसका मतलब क्या है? you have this 1 atom per unit cell. Now you can do longitudinal motion, okay, then you can do also transfer motion. एक मोशन तो ये हो गया, because it's 3 dimension, that is longitudinal motion, okay, and this is your what? Transfer motion. And transfer motion can be done 2 ways, okay. One is perpendicular, okay, and this is out of the board, out of the page, out of the board, this one, okay. So when you have a p equal to 1, f equal to 3, you'll have 3 acoustic branch, okay. You'll have 3 acoustic branch. Now out of the 3 acoustic branch, one will be LO, one will be LO, okay, and other will be transfer be mentioned by LT, I think. Transfer, sir, LA and LT, right? LA, longitudinal acoustic, okay, longitudinal acoustic, and that will be LT and TA, okay, transfer acoustic, okay, longitudinal or transfer acoustic, TA, transfer acoustic. So there will be 2, transfer acoustic TA1, transfer acoustic TA2, okay. So if I plot the graph, okay, for f equal to 3 and p equals to 1, okay, then you have 3 branches, okay, that will be, and the energy of longitudinal acoustic branch is higher, okay. So this will be transfer TA1 and this will be your TA2. This is your omega, this is your K, and this is your omega, okay. So this was for when your P is 1, okay. Now suppose P is 2. सर टीए मतलब ट्रांसवर्स acoustic ना, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स फॉर्म होते हैं क्या? हाँ, ट्रांसफर हो रहे हैं ना अभी. अगर ये लैटिस 3 dimensional है, so the transfer motion can be out of the page also, and suppose this is x axis, okay, then motion can be in y axis also, and that can be in z axis also. So there will be two transfer motion, one longitudinal acoustic, okay. Now Sir, suppose, why are we calling one longitudinal and the other 2 transverse? longitudinal क्या है? When your motion is in this direction, okay, I mean, in the direction K, your wave vector, when your motion vector is in the direction of x here. yes, okay. So so this will be your f3 and p1, okay. Similarly, if p equal to 2 and f equal to 3, then we total we have 6 branches, okay. So pf equal to 6, okay. So jitna f hoga utna acoustic branch to ho gayi, okay. So you will have 6 branches, okay. 3 will be acoustic, same 3 will be acoustic. So I'm plotting here. Let me move this, okay. So if p equal to, nazar nahi aa raha udhar, if p equals to 2, okay, f equals to 3, then pf equals to 6, okay, then you have and then you will have, okay, longitudinal acoustic, transfer acoustic 2, okay, optical longitudinal LO. Sir, in this case, optic. 3 acoustic and 3 optical Yes. will be there ना? Yes, okay. So इस तरह से आपके vary करें, इस तरह से you can write in general, if you have a 3D solid, you will have a 3p minus 3 your optical branches, and 3 will be your acoustic branches. So अब जरूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा मिले, ओके. थ्योरेटिकल तो हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है. अब जैसे 3 है, 3 की जगह एक्सपोनेंशियल आपको 2 भी मिल सकती है. वो डिपेंड करता है कि आप क्रिस्टल में किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं. कई डायरेक्शन इक्विवेलेंट होती है, ओके. जैसे 1 1 0 0 1 1 करोगे तो आपको हो सकता है आपको 3 की जगह 2 ही दिखाई दे. तो कैलकुलेशन के लिए you can do this, okay. So for example, you say metal, okay. मेटल में जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके अंदर क्या होता है, एक BCC lattice. हाँ,
this FCC lattice, they have FCC lattice. Okay, so there one lattice point पे एक ही atom होता है. Okay, so generally if you take copper and aluminium metals, you don't have this optical branch. Okay, you'll get only acoustic branch. For example, if you take silicon, okay, silicon, germanium, okay, they have a diamond crystal structure. Okay, so if you take the primitive cell, you can take primitive cell where there is two atoms. Okay, so for silicon, germanium, you have P equals to 2, so you get 6 branches. So you get 6 branches. Okay, so in this way, counting the how many number of atoms are present in primitive cell or at a site, you can calculate how many branches will be there in your सर P system. equals to maximum P का वैल्यू मतलब 2 ही है कि इससे भी ऊपर it can go? भी P equal to 2 हो सकता है, P equal to 3 हो सकता है. Can you give an example of 3? अब वो तो देखना पड़ेगा ना. ठीक है, जैसे बेरियम टाइटेनियम का क्रिस्टल होता है, बेरियम टाइटेनेट का यूनिट सेल होता है, उसमें P equal to 5 होता है. ओके, वो भी सॉल्व करेंगे जब आएगा तो. ठीक है, तो अभी तो ये मेन जो बेसिक्स है वो देख लो, फिर आगे देखते हैं आगे. हाँ, For K, I mean, in this graph, the graph on the board, for K tends to 0, the optical branch will have different energies. इन ब्रांचेस में हाँ डिजेनरेसी तो है ना. ऑप्टिकल ब्रांचेस भी वो तो डिपेंड करता है ना कि कितना 3D में है, 1D में, 2D में है. जितना डायमेंशन बढ़ेगा उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा, उतनी डायरेक्शन होगी उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा. ओके, डिजेनरेट होगा पर तो हायर के वैल्यू के लिए डी मतलब डिफरेंट पोलराइजेशन, हर ब्रांच का पोलराइजेशन हो जाएगा. you will get dispersion curve for per polarization. Okay, direction. सर मतलब समझा नहीं, डिस्पर्स पोलर क्या बोल रहे अभी हैं? आपकी जितनी डायरेक्शन हो जाएगी, जितनी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, उतनी तो ब्रांचें मिल रही हैं, उतनी तो ब्रांच मिलेगी आपको. ओके, जैसे आपका पहले 1D क्रिस्टल था, 1 एटम था, तो आपको एक ही मिल रहा था. जैसे उसको हमने 3D किया, यू गॉट 3 ब्रांचेस. ओके, सिमिलरली नाउ अगर आपने 2 एटम कर दिया तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ओके, जब एटम 1 है और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो आप F ही लिखते हो. अगर 2 एटम एक यूनिट में 2 हो जाते हैं, ओके, देन देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइज, दैट बिकम 2F. ओके, प्लस इनटू डायमेंशन इट बिकम 6. अभी एग्जांपल दिए मैं सारे करके बताया ना. जैसे दिस इज हियर P equal to 2, F equal to 3. Okay, so total branches is what? PF 6. Out of your F is what? F is acoustic, and remaining जितना भी बचेगा, that is your optical branch. Yes, Okay, so this is your so in 1D monotonic crystal you have only one polarization. Okay, so we'll see Debye theory, then we'll come to back on this. Okay, this we'll discuss again these things. Okay, so this was your what? हाँ सर, जो कॉपर और एल्युमिनियम बताया था उसमें भी 3 ब्रांचेस ही होंगी, राइट? हाँ, अगर 3D क्रिस्टल तो 3 ब्रांच होगी. ओके ओके सर. 3D क्रिस्टल 3 ब्रांच होगी. ओके, मेटल्स के अंदर. नाउ starting this your density of state. Now this is very important topic. Okay, now what I'm trying to calculate here, I'm trying to calculate here the general expression for density of state. Okay, जनरल एक्सप्रेशन डेंसिटी स्टेट का मतलब क्या है, वो आपका जो भी हम स्टेट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल टू योर लैटिस वाइब्रेशन लैटिस एंड एज वेल एज योर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, that will be applicable to electron. Okay, so because this restriction, okay, I told you whenever you apply periodic boundary condition, okay, so whenever you apply a restriction, okay, their quantization effect comes. Okay, so your k values are discrete. So whether you have a solid जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम डायमेंशन है, क्रिस्टल है, उसकी डायमेंशंस है, that will put restriction on k value. और आपका लैटिस ले रहे हो, okay, then also they have same crystal, same dimension. Okay, then dimension is putting restriction on k values. Okay, so this what I'm calculating in density state, that will be general. Okay, you can apply anywhere. You can apply for relativistic case,
Okay, you can apply on boson, you can apply on fermion, you can apply this acoustic waves, sound waves. Okay, so we have seen the density of state for 3D, 2D, and 1D. Okay, so we have Sir, in relativistic case, dimension will change, no, sir. We'll see, na. We'll calculate also. We'll calculate density of state. Okay. Okay. So now I told you what is the periodic boundary conditions. So this is your 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So say this is 0, 8. Okay. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 atoms. Okay. So you have a linear chain of atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now what? So this is n is equal to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And say the length is what? Length is L equals to this is length, this is total length A, L. Okay. So this is your x is equal to 0, and this here your x is equal to L. So if we join these 2 points, okay, so we can apply periodic boundary conditions. Okay, apply periodic boundary conditions. Okay, what is periodic boundary condition? That is displacement at 0. Okay, will be equal to displacement at L T. Okay, so if I write uxt, if my uxt is what? Uxt is u iota e power iota, okay, kx x minus omega t. If I'm writing x direction in this way, so these 2 amplitude यहाँ पे बराबर होने चाहिए. Okay, so make it equal. So if you put equal here, you'll get here e power minus iota omega t. Okay, and here you'll get what? If you put L iota kxl, okay, kxl and e power minus iota omega t, this will be cancel. This we already solved. Okay, so iota kxl equal to iota 2n pi. Okay, and that will give you kx value what? 2n pi 1 pi by L. Okay, where your n is what? Your n is 0 plus minus 1 plus minus 2, so on. Okay, from minus to plus. Okay, your k is from what? K is from here 1 minus 1 2 minus 2. Okay, so this is both directions. Okay, kx. So this is in 1 dimension, kx. Similarly, if I want to write for in y direction, okay, what I can write? So I have kx we have 2n pi upon L. Okay, where I can write n is equal to 0 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, so on. Similarly, if I want to write ky, okay, I can write this also 2m pi L, where your or you can write nx here. You can write nx. Okay, and then you can write here ny. Okay, here you can write nx. So this is ny, and this is pi आएगा ना सर 2nx pi आएगा ना 2nx pi आएगा pi. Okay, and ny you can write 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, so on. And similarly you can write for z direction. Okay, you can write z direction kz. You can write 2nz. So here you will take 0 value. Here you will consider 0, and 0 means that is no. Just let it be draw. Okay, 2 plus 3. Okay, so now इसको मिटा दो. Sir, wait, sir, you're saying kx तो x direction में vary, y means y direction में variation होगा. Okay, sir. इसको मिटा दो, इसको मिटाओ. Yes, sir. Okay, now I am considering 3D case. Okay, I am calculating my k space in 3 dimensions. So if I take k space in 3 dimension, so 3 dimension may, if you have a k space, okay, so I have a x direction, y direction, and I have a z direction. So this will be what? Your, if I want to draw, this will make a
sphere. Okay, and each point, because k are discrete, so this is your kx, so this is your ky, this is your what, kz. Now k is not continuous whether you're moving x direction or y direction. Okay, your k is discrete. That means here your k states will be represented by points. So these are your k states. Okay, So this is sphere or what? this is sphere, 3 dimension. Okay, I'm considering 3D case. So 3D case, if I take a wave vector, okay, and rotate, that will give you a sphere. Okay, so these are your all k states. और दो k स्टेट में कितना डिफरेंस है? if I want to move from here to here, okay, इसमें डिफरेंस कितना है? 2 pi by 8. If I move from x direction, how much I will move? 2 pi by l. Okay, and because यहाँ पे क्या है? nx. Okay, so your nx will change by 1. So difference between two states is 2 pi by l in x direction. Similarly, if you take y direction, the difference is 2 pi by l into 2 points. Okay, the difference between 2 points, the k value is 2 pi by l. Similarly, in y direction, it is also 2 pi by l. If you take z direction also, it is a 2 pi by l. Okay, so if I want to take a unit cell, okay, so what will the volume of unit cell in 3 dimension? Volume of, Sir, distance between 2 points in k direction. k space. kx, k space. भी okay, अगर sir. मैं एक यूनिट सेल बनाऊं यहाँ पे, तो Yes, sir. उसका डिस्टेंस 2 पाई बाय एल होगा, क्योंकि एक पॉइंट के देयर इज द you can see k value. Okay, Yes, so sir. the difference between two conjugate to k value is 2 pi by l. So x के डायरेक्शन में ना, kx हाँ, में देख रहे हैं तो x के x में, y में भी 2 pi by l है, z में भी 2 pi by l है. Okay, Okay, sir. so Okay, sir. if I take one unit cell, okay, so volume unit cell कितना हो जाएगा? k space 3D कितना हो जाएगा? 2 pi by 3 pi 2 pi by l. Okay, delta kx, delta ky, delta kz. Okay, so that will be what? 2 pi by l cube. क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? एक स्टेट ये है, एक स्टेट एक्स डायरेक्शन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 2 पाई बाय एल. क्योंकि बीच में गैप है ना, ये स्टेट है, फिर ये स्टेट आएगी, फिर ये स्टेट आएगी. दैट मींस एक स्टेट का वॉल्यूम कितना है? 2 पाई बाय एल एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 2 पाई बाय एल, जेड डायरेक्शन में 2 पाई बाय एल. ओके, सो एक स्टेट का वॉल्यूम इन 3D यू हैव 2 पाई बाय एल क्यूब. एंड इफ यू से दिस वेक्टर इज के, सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर कितना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 4 by 3 pi cube. Okay, now I know कि एक k सेल का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम पता है, so I can calculate how many k cells are present in this volume, isn't it? Yes, sir. Okay, if I know the Yes. volume of one cell, if I know whole volume, तो मैं अगर इस यूनिट वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, then I can calculate how many k values, okay, how many k cells are present, and each k value represent what? Mode, number of modes. Okay, number of modes, number of states. Okay, so in the case of lattice, we are saying modes. When there will be electron in the solid, okay, then we'll say free electron gas, we say number states. Okay, so this is, then what will happen? Okay, so if we now want to write the number of modes or number of k values, number of frequencies or number of states. Okay, so number of modes or states, अभी हमने degeneracy कैलकुलेट नहीं करी है. जैसे स्पिन, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन अप degeneracy 2 होती है. Okay, similarly we have seen in the for lattice vibrations. Okay, there we have acoustic branches, we have optical branches, so those things we are not calculating. Okay, so simple, I'm calculating number of modes. So number of modes or number of states, that will be what? Okay, so that will तो be, इसमें कैसे वेव्स क्रिएट होंगे सर? साइनसोइडल की कैसा होगा? इसमें कैसे वेव्स होंगे अरे सर? ये हम खाली के स्पेस को ड्रॉ कर रहे हैं. हमको ये पता चल गया कि एक स्टेट है, ये तो पता चल गया ना तुमको पहले.
Yes sir, yes sir. एक के एक स्टेट है, अब Yes, sir. उसको हम ज्योमेट्रिकली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर एक स्टेट के है तो टोटल के वॉल्यूम में कितनी स्टेट होंगी? ओके, सो नाउ नंबर ऑफ स्टेट विल बी व्हाट? नंबर ऑफ स्टेट विल बी सिंपली 4/3 डिवाइड बाय q divided by 2 pi by एल l द होल cube. क्यूब। Okay, so now this will give me what? This will give me number of n. Okay, so this will give me l cube 8 pi cube into 4/3 pi cube. Okay, so this will give you 2. Okay, pi cancel, will give you a square. Okay, so I'll get l cube to l cube come सकते हैं volume, total volume in case total volume l cube. Okay, this is this is an lx ly lz. Okay, so this will be v. Okay, v upon 2 pi. Okay, and then you have 1/3 k cube. Okay, and if you want density of state क्या होता है? Number of state per unit energy per unit k interval. So dn by dk will be v upon 2 pi. Okay, and this will give you So what? pi square. Okay, and this will give you what? 1/3 into 3k square. Okay, so 3 cancel हो गया, then you will remain with dk. So dk value will be what? V upon 2 pi. Okay, k square. Let me check. Pi square होगा ना sir, v upon 2 pi square. pi square. dn by d. हाँ, okay, so 2 pi square, so k square. Okay, so now I can write my density of state. Okay, dk is equal to v upon 2 pi square k square dk. Okay, so this is the density of state expression for 3D. अगर अब आपको you can convert this expression as you want. अगर आपको जैसे एनर्जी और के में रिलेशन दे रखा है फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी और के में क्या रिलेशन होता है? E equals to h cut k. E और के में, not p और k. E equals अच्छा h cut square k square by 2m. तो h cut square k square by 2m. ओके, तो आपको इसको आप इसको इस टर्म को एनर्जी के टर्म में भी, फंक्शन को एनर्जी में भी ला सकते हो. Okay, similarly you can bring this function in the frequency, in terms of frequency. You want to bring it d omega d as a function of frequency omega. Last time you've done one problem. Okay, you can convert this function as omega also, so you can use this expression. Okay, to calculate density of state. Okay, for lattice also as well as for electron in solid also. Okay, so this was in 3D. इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है अभी? सर एक यूनिट सेल में कितना मोड्स हो रहा है, ये ना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताएगा पर यूनिट के वैल्यू में, पर यूनिट के की वैल्यू में dn by dk, पर यूनिट के की वैल्यू में, पर यूनिट नॉट इंटरवल, पर यूनिट के में कितने मोड्स हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट. डेंसिटी क्या होती है? किसी चीज की डेंसिटी क्या? वॉल्यूम. वो तो मास होता है. तो ऐसे ही यहाँ पे n by k. ओके, एक पर यूनिट वैल्यू ऑफ k, how much states are there, that's the density of state, dn by dk. Okay, so this is your density of state. Okay, now this is for 3D. now for 2D के लिए कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे? सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे. क्या डिफरेंस आएगा 2D में? 2D में आपका जो एरिया हो जाएगा 2 pi by l the whole square हो जाएगा. वो खाली क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी के वाई के एक्स, और तो कुछ चेंज आएगा नहीं. each point is in space, each point is a state. Okay, and the difference between two consecutive points is 2 pi by l. Okay, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो है नहीं, एरिया है. ओके, सो नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएगी इसमें? number of states, pi k square upon 2 pi by l the whole. So number of state will be pi k square upon 2 pi upon l square. Okay, so this will be l square 4 pi square. Okay, pi k square
pi से pi cancel, this will give you L square 4 pi upon k square n, and if for density of state dk, that will be what, dn by dk, that will give you what, L square. L square is what, area. L square is area. Okay, 2 pi. by 2 So pi 2 k pi, dk. 2 pi k. Okay, so this will give you dk, okay, a upon 2 pi k dk. 2D में आ गया ये, डेंसिटी ऑफ इन 2D. क्या प्रॉब्लम है? सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो, अब बस लास्ट एक 1D भी कर दो. अब कितना कर दिया, 2 मिनट में 1D हो जाएगा. 1D कर दो. सर डिस्टेंस -2 के लिए या फिर सिर्फ के लिए? डिस्टेंस 2 के लेना पड़ेगा ना, k की वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम लोग k की प्लस वैल्यू भी ले रहे हैं, माइनस वैल्यू भी तो ले रहे हैं यहाँ पे. हाँ हाँ. अगर LK by pi into DK. अगर ये अगर हम लोग पीरियोडिक बाउंड्री की जगह फिक्स बाउंड्री लगाते हैं, तब क्या करते हैं? तब खाली k की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. यस सर. ओके, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने एरिया पाई के स्क्वायर लिया, तब हम क्या लेते हैं? 4 पाई के स्क्वायर, इफ यू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. Okay, Yes, sir, yes. And the unit and the volume will be what? Pi L. If you are taking fixed boundary condition, then the unit cell volume will be what? Pi by L instead of 2 pi by L. K can only take positive values. तो ये डिफरेंस है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन एंड फिक्स बाउंड्री कंडीशन में. रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना? रिजल्ट सेम आएगा. ओके, भी आपने जब पार्टिकल बॉक्स करा था, तब पार्टिकल बॉक्स के लिए आप नहीं सॉल्व करते थे. आपका पार्टिकल बॉक्स 0 to a में सॉल्व करते थे. Then you have some k value, and you when take my limit -a to a, then also you have some k values, different k values. So similarly here, okay, so you have now, we are taking periodic boundary conditions. Okay, so this is your 2D. Now if I take 1D case, if I take 1D case, so in 1D case I have this value, okay, 0, okay, so 2 pi by L, okay, 4 pi by L, okay, minus 2 pi by L plus minus 4 pi by L, okay, so this is k here, k values, so k here minus k here. Okay, so if I want to take states, okay, so there will be line, volume will be now what, be line, okay, it will line, that will be 2k, and the unit cell volume is what, 2 pi by L. Okay, so what will it 2, okay, so there will be LK upon pi. So it will be k upon 2 pi by L ना? k Not upon 2k क्यों लिया? 2k लेंगे ना अब, क्योंकि लाइन वॉल्यूम में भी तो जब हम स्पेल ले रहे तब भी तो माइनस ले रहे थे, माइनस की वैल्यू ले रहे थे. स्पेल लिया तब भी तुम प्लस ले रहे थे. तो दीस आर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस ना. So if you take periodic boundary condition, okay, so now dk will be what, dn upon dk, okay, that will be what, L upon pi simply, and dk will be L upon pi dk. Okay, so ये सिंपल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है. अभी इसके अंदर हमने डीजेनरेसी को इंक्लूड नहीं किया, पोलराइजेशन स्टेट्स को या डीजेनरेसी को इंक्लूड नहीं किया है. So this is our 1D case. Okay, so these 3 are master equations. Okay, so जब जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं. So we will meet tomorrow. Okay, any doubt? आज क्लास में कोई डाउट है? सर ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे को बता देते सर. ये एरिया वॉल्यूम, सो वॉल्यूम में तो आपने पूरा यूनिट सेल का लिया, नेगेटिव 3 डायमेंशन वॉल्यूम ले रहे तो नेगेटिव तो पूरा ले रहे हैं, केवल नेगेटिव तो ले ही रहे हैं ना. 3 डायमेंशन में स्फीयर था, 2 डायमेंशन में सर्कल था, 1 डायमेंशन में लाइन है. तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ले रहे हो या फिक्स बाउंड्री कंडीशन ले रहे हो, अगर आप इसी को करोगे फिक्स बाउंड्री कंडीशन में, तो एन क्या आएगा, आप खाली पॉजिटिव लोगे 0 to L, तो आप खाली k लोगे और पाई बाय L, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना. ओके पूरा लेना है तो ओके सर. हाँ सर एक बेसिक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ पूछिए ना. हाँ सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब वो याद नहीं आ रहा है. के स्पेस मतलब हम एक बेस स्पेस कंसीडर कर रहे हैं क्या, कि रेसिप्रोकल लैटिस का स्पेस होता है? हाँ, के क्या होता है? के आपका क्या 2 पाई बाय लैम्बडा होता है ना. यस, वे विल.
तो ये तो वेवलेंथ, ये तो डिस्टेंस है, मीटर है, Yes. ये इसका इनवर्स है। ओके, सो तो ये रेसिप्रोकल लैटिस हो गया ना, ये 1/k। ये रेसिप्रोकल स्पेस ही तो हो गया के। It's basically Fourier space to the हाँ, वो उसको जैसे फूरियर स्पेस बोल दो। सो इसमें कैलकुलेशन करना आसान है, निकालना आसान है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं के स्पेस को। के को डील करना ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू अगर आप डायरेक्टली वेवलेंथ को डील कर रहे हैं या फिर एनर्जी को डील कर रहे हैं। के को डील करना आसान होता है, दैट्स व्हाई वी डूइंग ऑल द कैलकुलेशन विद के स्पेस। Yes. Okay, now a lot of questions are there in the chat. Let me read. I don't know, you are discussing yourself or you are asking me the question. Okay, so जो डाउट क्लास है, ओके, विल कीप डाउट क्लास ऑन संडे। ओके, आपका जो भी डाउट है इस लेटेस्ट वाइब्रेशन में, यू कैन ब्रिंग ऑन संडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.